So in the previous class we have completed yes GMO थोड़ा सा हम डिस्कशन किए थे genetically modified organisms right और ना जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि tailor made plants means we can say it is a type of what transgenic plants being modified genetically either by means of addition of the foreign gene or gene of interest or by means of subtraction of the desired undesirable gene by means of either knockout or by means of silencing the gene expression. ठीक है अब यहाँ पे हम लोग ये एडिशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड साइलेंसिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे मतलब एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन बोथ. Before that you just have to identify name. Who is the father of Green Revolution? Who is the father of Green Revolution? ये दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना जरूरी है. Father of Green Revolution. M.E. Borlaug. And father of Green Revolution in India. M.S. Swaminathan. And Green Revolution जो start हुआ था is mostly first it is giving the emphasis on the rice and ये कहाँ पे start हुआ था ना that is in the Mexican countries Mexico and Indian subcontinent इस जगह पे पहले start हुआ था and बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल हो गया था जो प्रोडक्शन रेट है वो ट्रिपल हुआ था तो ये बहुत ही मैस सक्सेस हुआ था. उसके बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन अलग अलग क्या है ना क्रॉप्स के लिए यूज किया गया है. We are coming to the examples of the GMO genetically modified organisms. So first we are coming to addition of gene. पहले एडिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. अंडर दैट वी विल स्टार्ट. फर्स्ट इज गोल्डन राइस. Golden rice. The golden rice which is being prepared or that is developed by Ingo Pertiguis and Peter Boyle. Ingo Pertiguis and Peter Boyle. And Ingo Pertiguis and Peter Boyle ये क्या किया था ना गोल्डन राइस बनाए थे by using beta carotene gene. Beta carotene gene and beta carotene याद रखिए it is actually a carotene precursor of vitamin A. Precursor of vitamin A. विटामिन ए से बनता है आपका जो रेटिनल है हम लोग पढ़े थे तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम दैट गिव्स राइज टू व्हाट ना प्रिवेंशन ऑफ द नाइट ब्लाइंडनेस. गोल्डन राइस का कलर गोल्ड कलर का था बिकॉज कैरोटीन का कलर क्या होता है ना कैरोट हम लोग खाते हैं गाजर उसका जो कलर है ना उसी का ही कलर कैरोटीन के वजह से ही गाजर का कलर ऐसे है डीप येलो.
है कि नहीं? एंड राइस के कोर पार्ट में ये कैरोटीन प्रेजेंट होने की वजह से राइस व्हाइट कलर नहीं दिखेगा, गोल्ड कलर दिखेगा, येलोइश कलर दिखेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, गोल्डन राइस. तो गोल्डन राइस जो कंज्यूम करेगा along with the carbohydrate they will also get what na, carotene, है कि नहीं? एंड ये कैरोटीन आपके बॉडी में जाएगा तो विटामिन ए सिंथेसिस होगा कि नहीं? एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन बी योर दैट इज रिजल्ट बाय मींस ऑफ ईटिंग व्हाट ना, गोल्डन राइस. तो कैसे बनाए तो वो भी देख लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टेकन डैफोडिल प्लांट. साइंटिफिक नेम क्या है? नार्सिकस एंड स्यूडोनार्सिकस. Narsicus, pseudonarsicus, the scientific name of the daffodil plant, and daffodil plant is the source of beta carotene gene. तो किस प्लांट से बीटा कैरोटीन जीन एक्सट्रैक्ट किया गया? डैफोडिल प्लांट और स्यूडोनार्सिकस, नार्सिकस स्यूडोनार्सिकस, राइट. अब हमेशा याद रखिए, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बोल रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखिएगा. बायोटेक में जितने भी जीन हम लोग यूज करते हैं ऑल सिंथेटिक जीन. मतलब ये जो एडिशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये कोई नेचुरल जीन नहीं है. नेचुरल जीन से हम लोग सिंथेटिक जीन बनाते हैं बाय मींस ऑफ व्हाट ना, पीसीआर. मतलब आप बोलेंगे कि सिंथेटिक जीन कैसे हो सकता है? भाई सिंथेटिक हम लोग खुद बनाए हैं, पीसीआर के थ्रू ही बना रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ पे नेचुरल जीन को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं. वी हैव मेड द सिंथेटिक जीन फ्रॉम नेचुरल जीन बाय मींस ऑफ पीसीआर एंड देन इट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट. तो यहाँ पे सोर्स क्या था बीटा कैरोटीन जीन का? ना, डैफोडिल प्लांट. नाउ इट इज टू बी इंसर्टेड इनटू राइस प्लांट. एंड राइस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सैटिवा. एंड आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं. सो इट शुड बी द वेक्टर इज एग्रोबैक्टीरियम होगा, दैट इज टीआई प्लाज्मिड. तो ये हमेशा याद रखिए कि किस प्रोसेस में कौन सा वेक्टर को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. सो हियर वी आर यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम एक्ट एज ए प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, to introduce this beta carotene synthetic gene into rice plant. Now this rice plant becomes, rice plant बन गया कौन? ट्रांसजेनिक हो गया कि नहीं? क्योंकि इस राइस प्लांट के अंदर अभी कौन सा जीन प्रेजेंट है? ना, बीटा कैरोटीन जीन प्रेजेंट है. तो ये प्लांट गोल्डन राइस में कन्वर्ट होगा कि नहीं? That will produce golden rice. समझे कि नहीं? गोल्डन राइस में क्या होगा? विटामिन ए होगा कि बीटा कैरोटीन होगा? विथ बीटा कैरोटीन. क्योंकि हमने सिर्फ जीन इंट्रोड्यूस किया है, बीटा कैरोटीन जीन. तो जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा. तो ये बीटा कैरोटीन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है एंड उसी से बनेगा विटामिन ए. समझे कि नहीं? तो ये था गोल्डन राइस. अभी हम लोग सेकंड में आते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ हीरोडिन. एक्सट्रैक्शन ऑफ हीरोडिन हम लोग पढ़े कि हीरोडिन नेचुरल एंटीकोआगुलेंट.
is a natural anticoagulant extracted from hirudin gene will be extracted from medicinal leech, because we are using this anticoagulant hirudin for medicinal purpose, right? मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करेंगे उस हिरुडिन को, तो ये मेडिसिनल लीच होना चाहिए, कोई एरागेरा लीच नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? एंड दैट मेडिसिनल लीच इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज हिरुडिनारिया medicinals. It is not Hirudinaria granulosa. It is Hirudinaria medicinalis, the medicinal leech. वहां से हम लोग हिरुडिन जीन एक्सट्रैक्ट करेंगे. Now this hirudin gene extracted from the medicinal leech now introduced into Brassica. Brassica napus. Brassica is the scientific name of mustard. ठीक है ना? तो मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका. तो हमने इस हिरुडिन जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया? बाय यूजिंग विच वेक्टर? वेक्टर हम लोग यहाँ पे यूज वही एग्रोबैक्टीरियम करेंगे कि नहीं? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होगा तो वेक्टर क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम. तो बाय मींस ऑफ यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर वी आर इंट्रोड्यूसिंग the hirudin gene, synthetic gene into the brassica. अब brassica बन गया transgenic. সুস্মিতা মজুমদার মুখার্জি কে আছে? সুস্মিতা মুখার্জি, তুমি তোমার চাবিটা নিয়ে নিচে এসো, তোমার প্যারেন্টস আছে तो पेरेंट्स चाबी लेके जाओ घर जाने के लिए ना. चाबी आप ले लीजिए, उसको क्यों जाना? उनसे बात ठीक होगा. क्लास के बीच में ये सब ठीक नहीं है ना. क्लास के बीच में ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता है. नहीं, आप जाइए जाइए और जल्दी करिए. So we are discussing what? Now introduced into brassica, that is the plant becomes what? Not transgenic, right? अब इस ट्रांसजेनिक प्लांट ब्रेसिका को आप अगर कल्चर करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ दिस, cultivation of this plant will produce what? Will produce what? ना ऑयल भी मिलेगा प्लस हिरुडिन भी मिलेगा. एंड इसको कैसे आप सेपरेट करेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. याद है? तो इस प्लांट का, क्योंकि ये ब्रेसिका है, मस्टर्ड प्लांट है, तो मस्टर्ड प्लांट का सीड होगा, है कि नहीं? तो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है उससे आपको ऑयल भी मिल जाएगा प्लस ऑयल में जो हिरुडिन है वो भी मिलेगा. एंड हम लोग ऑयल एंड हिरुडिन को सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ व्हाट? ना डाउनस्ट्रीम. तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हुआ? तो हम लोग का तो वही एम था ना कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. क्लियर है? तो ये एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल. एडिशन में नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं, दैट इज insect resistant plant, बीटी प्लांट. पढ़े हो ना? बीटी प्लांट. बीटी का साइंटिफिक नेम क्या है? Bacillus thuringiensis.
बाद में लिखते हैं इसको क्योंकि उस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो बैसिलस thuringiensis, this is the bacteria named for the BT plant. कहानी में एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो बीटी प्लांट है, ये क्या होगा, ये खुद इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करेगा या इंसेक्टिसाइड हम लोग को एक्सटर्नली यूज करना पड़ेगा? खुद ही प्रोड्यूस. तो वी कैन से दिस इज प्रोड्यूसिंग ओन इंसेक्टिसाइड. क्योंकि ये प्लांट खुद इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दे विल बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट. So no need of further using of insecticide from the external source. तो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा इंसेक्टिसाइड यूज करना. ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिए. Bacillus thuringiensis stands for BT. तो Bacillus thuringiensis में बैक्टीरिया है. During sporulation, Bacillus thuringiensis a bacteria during sporulation, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं. ये जो स्पोरुलेशन के टाइम में ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूसेस ए प्रोटॉक्सिन. एंड दैट प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन called delta endotoxin. Remember, the name of that protoxin or inactive toxin is called as what? Delta endotoxin, being produced by the bacteria during the sporulation. Right? And this endotoxin, when engulfed by or eaten by इंसेक्ट. हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट क्या करते हैं ना, दे अटैक द प्लांट टू कॉज द हैप्पी लॉस टू द क्रॉप. तो ये इंसेक्ट जब इस प्लांट को अटैक करेगा तो प्लांट का जो लिव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसको भी खा लेता है. इसी फ्रूट फ्लावर लिप्स पे ये प्लांट बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, बैसिलस. सो बैसिलस इज अ प्लांट बैक्टीरिया. So these are present in what? Na, leaves, flowers and fruits of or the part of the plant. And when these insects are fed on this plant, this bacteria also enter into the alimentary canal of insect. Yes or no? So sporulation of this bacteria producing the endotoxin, and when this bacteria eaten by insect, that comes to midgut. Midgut of insect. And midgut of insect contains what? Na, alkaline pH. ये इंपॉर्टेंट है. अब अल्कलाइन पीएच में मिडगट में ये जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन है, दैट डेल्टा एंडोटॉक्सिन converted into in presence of what na, protease enzyme. The protease enzyme means the enzyme which will cleave the proteins are called as what na, protease. तो ये protease enzyme किस pH में activate हुआ ना, alkaline pH में. कहाँ पे? midgut. The midgut alkaline pH, endotoxin converted into what na, small protein. तो delta endotoxin converted into small form of endotoxin. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई डेल्टा एंडोटॉक्सिन लार्ज फॉर्म है कि स्मॉल फॉर्म है? लार्ज.
डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो इनएक्टिव है वो लार्ज फॉर्म है कि स्मॉल फॉर्म है? लार्ज एंड वो प्रोटीज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होके स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एंडोटॉक्सिन। इसको बोलेंगे एंडोटॉक्सिन ना बोल के बेटर यू कैन राइट जस्ट व्हाट ना, स्मॉल फॉर्म ऑफ टॉक्सिन लिखिए, बेस्ट होगा, स्मॉल फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। तो टॉक्सिन मतलब इनएक्टिव हुआ कि एक्टिव हुआ? एक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव फॉर्म लार्ज होता है लेकिन एक्टिव फॉर्म क्या है? स्मॉल। भाई यहाँ पे अल्टीमेटली ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का मतलब क्या है ना, दोज हु क्लीव द प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन इनटू स्मॉल फॉर्म। समझे कि नहीं? तो इसीलिए स्मॉल फॉर्म cause the harm और large form will cause the harm to the insect। एंड इसके लिए कौन चाहिए ना, प्रोटीज एंजाइम चाहिए। एंड प्रोटीज एंजाइम कहाँ एक्टिवेट होता है ना, अल्कलाइन पीएच इन द मिड गट। कंसेप्ट को समझिए, ये क्यों हो रहा है। अगर मिड गट में नहीं आता, अल्कलाइन पीएच नहीं होता, तो प्रोटीज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता, then delta endotoxin or inactive toxin will not converted into small form or active form, तो इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं होता। Now this small form of toxin will cause a damage to epithelium of intestine, and उसके वजह से इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा ड्यू टू स्टार्वेशन। समझे कि नहीं? क्योंकि ये एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है। डैमेज करने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेशन होगा, वो प्रिवेंटेड होगा, अफेक्टेड होगा, एंड द इंसेक्ट विल डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। तो यहाँ पे प्लांट खुद इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करेगा। कैसे? नाउ व्हेन दिस बीटी जीन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू दैट प्लांट, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या नेचुरल प्रोसेस है कि भाई ये बैक्टीरिया है, तो उस इंसेक्ट जब बैक्टीरिया को खा लेता है तो बैक्टीरिया के बॉडी में जो ये एंटोटॉक्सिन है वो एक्टिव होकर इंसेक्ट को मार देता है। लेकिन हम लोग अभी प्लांट को बनाएंगे ट्रांसजेनिक। कैसे बनाएंगे ट्रांसजेनिक? बाय मींस ऑफ यूजिंग दिस बीटी जीन। समझे कि नहीं? बीटी जीन को हम बैक्टीरिया से निकाल के किस में डालेंगे? प्लांट में। तो प्लांट बन जाएगा बीटी प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट। अब सेम इवेंट जो हम देख रहे हैं वो प्लांट में भी होगा। कंप्लीट है गया पे। कंप्लीट। Now this delta endotoxin is encoded by gene, small c। जीन होगा तो स्मॉल सी होगा, अगर प्रोटीन होगा तो कैपिटल सी होगा। यहाँ पे मैंने जीन लिखा है, स्मॉल सी होगा। सो डेल्टा एंडोटॉक्सिन को जो जीन एनकोड करता है, बनाता है, उस जीन का नाम क्या है ना? क्रायोजीन। तो डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन इज एनकोडेड बाय क्रायोजीन बाय, यहाँ पे प्लांट क्या है ना, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट सपोज टू बी बीटी प्लांट। तो प्लांट हो गया तो वेक्टर क्या यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरिया। तो बाय एग्रोबैक्टीरिया Trigen introduced into a plant. Now this plant is called as BT plant or transgenic BT plant.
देखिए क्रायोजीन मेनली 3 टाइप का है, क्राई 1AC and cry 2AB, and third is cry 1AB. Direct question, cry 1AC and cry 2AB is actually encoding the cotton bollworm. It is used to control cotton bollworm, and cry 1AB used to control it is corn burr. तो कॉर्न बरर एक इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करना है तो कौन सा जीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्राई 1AB. अगर कॉटन बॉल वर्म जो कॉटन प्लांट को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं उसको कंट्रोल करना है तो कौन सा जीन इस्तेमाल करेंगे, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB. एंड ये जो बीटी प्लांट है, बीटी प्लांट का एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन. सबसे ज्यादा सक्सेस कौन हुआ, बीटी कॉटन. आप बोलेंगे सर ये तो फूड है, राइस, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, मतलब इसमें भी क्या होगा ना, वही डेल्टा एंडोटॉक्सिन होगा. तो ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन जब हमारे बॉडी में आता है तो ये सेम प्रोसेस करेगा, अगर करता तो हम लोग बनाते क्यों. तो इंसेक्ट की तरह हम लोगों का भी ये इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है, हम लोग भी स्टार्व होके मर जाते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म ना, बिकॉज व्हेन दिस डेल्टा एंडोटॉक्सिन विल एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है वो बहुत ही हाई एसिडिक पीएच है इन द स्टमक. तो उस हाई एसिडिक पीएच में ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन डीनेचुरड हो जाता है, लॉस हो जाता है, एंड दैट इज विल नॉट कॉज एनी हार्म. दैट इज व्हाई वी कैन ईट दिस बीटी, दैट इज व्हाट ना, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एटसेट्रा. बट फिर भी थोड़ा सा इसमें साइड इफेक्ट दिखा बोल के ये बंद कर दिया है. अभी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है, कॉटन, बीटी कॉटन. तो नाउ इंसेक्ट 3 अलग अलग टाइप का है, दैट इज लेपिडोप्टेरन. क्वेश्चन आता है, लेपिडोप्टेरन, बायोलेप्टेरन, बैक्टेरियन. लेपिडोप्टेरन में कौन आता है, आर्मी वॉर्म एंड कॉटन बॉल वर्म. एंड कोलेप्टेरन में कौन आता है, बिटल्स. एंड डायप्टेरन में कौन आते हैं, फ्लाइज एंड मस्किटोज आते हैं. तो हम लोग जो यूज करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर व्हाट ना, कॉटन बॉल वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, ये सारे के सारे यूज करेंगे. तो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रीक्वेंटली आता है एज ऑल फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट, याद रहेगा. अगर मैंने जीन लिखा है तो स्मॉल सी,
अगर इसको हम प्रोटीन बोलेंगे तो हो जाएगा कैपिटल सी, तो क्राई प्रोटीन। एंड अगर ये स्मॉल सी हुआ तो जी। याद रखिएगा, मैंने इसीलिए स्मॉल सी हर जगह लिखा था। क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, ये सारे के सारे जीन है। अगर ये प्रोटीन बनाएगा तो उस एंडोटॉक्सिन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? क्राई प्रोटीन। कंप्लीट। So we are coming to the next topic of this chapter. जीन एडिशन का 3 एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं जीन सब्सट्रैक्शन। Gene subtraction. And already I've told you, gene subtraction may be in 2 different ways. Knockout हो सकता है and by means of silencing. So we are coming to the knockout, तो हम लोग यहाँ पे skip करेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सा ना, silencing of the gene expression by means of discussion of a topic like your RNAi और RNA interference, और उसको बोलते हैं अदरवाइज एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी और RNA साइलेंसिंग। तो एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी और RNA इंटरफेरेंस और RNA साइलेंसिंग, ये किसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं? Silencing the gene expression, not by the knockout but by means of the silencing. किसको साइलेंट कर रहे हैं? RNA को साइलेंट कर रहे हैं। Gene will be expressed to form the protein through the mRNA, right? बात को समझिएगा। तो gene will be express the protein by means of formation of what ना, mRNA। ये हो गया supposed to be double stranded DNA। अब ये double stranded DNA by means of the transcription they will produce the mRNA जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। अब अगर इस सिंगल स्टैंडर्ड mRNA को हम अगर क्या किए ना, एक्सप्रेस करने अलाउ किए, तो देन दे विल फॉर्म व्हाट ना, प्रोटीन। अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड mRNA का एक अपोजिट मतलब कंप्लीमेंट्री कॉपी इस यहाँ पे ऐड कर दिए, then that mRNA becomes what ना, डबल स्टैंडर्ड RNA। तो डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया तो जीन साइलेंसिंग हो गया, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ना, प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पे ब्लॉक हुआ कि नहीं? प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पे ब्लॉक हो गया। So we are silencing the gene expression by means of silencing what ना, mRNA। इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको? RNA साइलेंसिंग। अब यहाँ पे फैक्ट ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो mRNA है उसको बोलते हैं सेंस RNA और mRNA, राइट? तो RNA को आपको ब्लॉक करना है, RNA को डबल स्टैंडर्ड बनाना है, तो वी नीड अनदर कंप्लीमेंट्री mRNA, है कि नहीं? कंप्लीमेंट्री RNA टू दैट ऑफ mRNA, उसको बोलेंगे एंटीसेंस RNA। अरे है कि नहीं? तो आपको सेंस RNA को अगर ब्लॉक करना है तो आपको उसका अपोजिट RNA चाहिए ना, एंड दैट अपोजिट RNA इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एंटीसेंस। इसीलिए उसको बोलते हैं एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। समझे कि नहीं समझे? कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन फटक से बन जाएगा। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज RNA साइलेंस?
Why it is called as antisense RNA technology? Why it is called as interference? Because हम लोग RNA को interfere कर रहे हैं कि नहीं? And that is why a very important discovery. And this is discovered by here, that is two scientists, Andrew Z. Fire and Craig C. Mello. ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड, इट इज natural defense of all eukaryotic cell. It is a natural defense of all eukaryotic cell. मतलब आपके जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट हो या एनिमल हो, इस सेल में ये एक नेचुरल मेथड प्रेजेंट है. इट इज अ नेचुरल डिफेंस. डिफेंस मतलब आप क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? कि आपकी बॉडी में जितने भी डीएनए है, एवरी डीएनए डज नॉट फॉर्मिंग द प्रोटीन. समझ में? Because you have the DNA which maybe have the gene which is desirable gene or maybe the harmful gene. If the harmful gene will express through the mRNA, that harmful protein will form and the metabolism become error. And that gives rise to what? Autoimmunity. That gives rise to any kind of abnormality in the metabolism, biochemical abnormalities. तो naturally human के body में प्लस ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस है टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अनवांटेड जीन. बात को समझे? द क्वेश्चन ये है कि हाउ कम्स दिस एंटीसेंस आरएनए कम्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एंटीसेंस आरएनए? आपके बॉडी में सेंस आरएनए आता है, एमआरएनए आता है, वो समझ में आता है. लेकिन ये एंटीसेंस आरएनए अगर नहीं आएगा तो इस एमआरएनए को हम लोग ब्लॉक कैसे करेंगे? समझने के लिए कोशिश करिए, नहीं तो बेटा फालतू में आप लोग लटक जाओगे. लटकना है तो ठीक है, समझाने के टाइम में लिखना नहीं है, कॉमन सेंस होता है. बात को समझ रहे? तो अगर ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है तो व्हिच इज द सोर्स ऑफ एंटीसेंस आरएनए? आपके बॉडी में एंटीसेंस कहां से है? हम लोग को पता है भाई. एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का. एंड व्हिच स्ट्रैंड फॉर्म द एमआरएनए? कोडिंग स्ट्रैंड बनाता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है? ऑब्वियसली टेम्पलेट. इतना भी नहीं पता तो बोलिए ना. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़े हैं? आई डोंट होप कि आप लोग पढ़े हैं रियली में, क्योंकि आप लोग तो क्लास नहीं करते हैं ना. सबको सूद के साथ वापस मिलेगा फल. जस्ट वेट एंड वॉच. तो टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, काउंटडाउन स्टार्टेड. सूद के साथ मिलेगा जरूर. सो टेम्पलेट स्ट्रैंड विल प्रोड्यूस द एमआरएनए, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड तो आरएनए नहीं बनाता है. अगर कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए बनाता तो उसको बोलते हैं एंटीसेंस. क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर सेंस आरएनए बना रहा है तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या बनाता? एंटीसेंस. लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड नेवर फॉर्म आरएनए. मतलब ये है कि हमारे बॉडी में नेचुरली एंटीसेंस आरएनए बनता नहीं है. तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि इट इज अ नेचुरल डिफेंस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और सेल. मींस कहीं से तो एंटीसेंस आरएनए आता है एंड वो हिट मिस. हियर द सोर्स ऑफ antisense
source of antisense RNA is from virus infection and transposons. भाई कोई वायरस आपको अटैक किया, क्या अटैक? वायरस अगर आरएनए वायरस है, मोस्टली तो वायरस आरएनए होते हैं, एंड ये वायरस का जो आरएनए है वो वायरस तो रेप्लिकेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो आपके बॉडी में भी वायरल जीन प्रेजेंट होगा कि नहीं? एंड अगर वो वायरल आरएनए सेंस के ऑपोजिट होगा तो एंटीसेंस होगा कि नहीं? क्योंकि आपके बॉडी में तो मिलियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस हमेशा अटैक करता रहता है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी हो बोल के ये वायरस ज्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाता है, डेथ हो जाता है, लेकिन उस वायरस का आरएनए तो आपके बॉडी में प्रेजेंट होगा, एंड इफ दैट आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सेंस आरएनए इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एंटीसेंस। तो ये नेचुरल डिफेंस है कि नहीं? ट्रांसपोजन हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, वॉकिंग डीएनए, जंपिंग डीएनए में भी आरएनए, एंड अगर ये डीएनए आरएनए प्रोड्यूस किया एंड वो आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो ये एनसीईआरटी का लाइन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीसेंस आरएनए और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑफ सेंस, सो दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द वायरस एंड ट्रांसपोजन्स। समझे? अब एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में आते हैं, एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, इसी एग्जांपल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नॉर्मली जो पैरासाइट होते हैं और जो पेस्ट होते हैं नीड पैरासाइटिक प्रोटीन the parasite need what? Na parasitic protein to grow inside host. अगर किसी पैरासाइट को होस्ट में ग्रो करना है तो क्या चाहिए? नीड व्हाट? पैरासाइटिक प्रोटीन टू ग्रो इनसाइड द होस्ट। तो मतलब किसी भी पैरासाइट को अगर होस्ट में ग्रो करना है तो उसको डेफिनेटली ये पैरासाइटिक प्रोटीन नीड है, एंड दिस पैरासाइटिक प्रोटीन secreted by or coded by parasitic gene in parasite body. तो पैरासाइट जीन किस में प्रेजेंट है? होस्ट में तो नहीं होना चाहिए ना। अगर होस्ट में पैरासाइटिक जीन होगा तो आराम से कोई भी पैरासाइट हमारे बॉडी में ग्रो कर सकता है। तो ये पैरासाइटिक जीन किस में प्रेजेंट है? पैरासाइट में प्रेजेंट है, एंड ये पैरासाइट और पेस्ट they will form the parasitic protein from this parasitic gene so that this parasite will able to grow inside the host. कंसेप्ट को पहले समझिए, आंसर बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। So we need to provide or we need to produce which plant? Pest resistant की pest sensitive और parasite resistant tobacco plant। तो हम लोग को किसी तरीके से पैरासाइटिक प्रोटीन को फॉर्मेशन से प्रिवेंट करना। We need to block the synthesis of parasitic protein. अगर ये parasitic protein नहीं बनेगा तो parasite is unable to grow inside the host, and this protein is synthesized or coded by a particular gene, मतलब DNA। अब इस DNA से बनेगा mRNA, उस mRNA से बनेगा प्रोटीन, that is parasitic protein। हम उस DNA को mRNA फॉर्म में ही ब्लॉक कर देंगे।
तो पैरासाइटिक प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा. Then that parasite becomes unable to grow inside the host. Then that plant will be called as what? Pest resistant or parasite resistant. नेचुरल है कि नहीं? अब इस प्लांट को हम लोगों को पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगा क्या? बिकॉज दैट प्लांट इटसेल्फ इज पेस्ट रेजिस्टेंट. बायोटेक्नोलॉजी कितना इजी कर दिया है देखिए. So need parasitic protein to grow inside the host, coded by the parasitic gene or parasite. Now, by means of जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं इस डिस्क्रिप्शन का, इस पेस्ट का नाम देते हैं. उस पेस्ट का नाम है मेलोडिका इनकॉग्निटा. Melodica incognita, it is a plant nematode. नेमाटोड मतलब क्या है? आस्केलमिंथेस याद है? मतलब राउंड वर्म. ये प्लांट राउंड वर्म है कि एनिमल राउंड वर्म है? So it is a plant nematode, that is Ascalminthus, a roundworm which infecting what? Nothing, infecting the tobacco plant. And that tobacco plant will cause a disease called as root knot disease. Nodules बना देता है वो. Nodules in the root. And इसके वजह से क्या होगा? The efficiency of absorption of nutrient by this plant will be gradually decreased. And the plant becomes gradually weak and leads to death. समझे? So by RNAi or antisense RNA technology, we can able to form the double-stranded RNA of sense RNA to block the synthesis of parasitic protein. In transgenic plant. ठीक है? इससे ज्यादा डिटेल्स आने की जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से मैकेनिज्म रिलेटेड नहीं आता है. थोड़ा सा फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा ताकि आप लोग को आइडिया थोड़ा सा लगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, कैसे बनाते हैं. राइट? तो ये ऑफ दी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन आइडिया देना चाहिए आप लोगों को ताकि समझ में आए कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग बनाते कैसे. कंप्लीट? यस और नो? जल्दी.
खत्म. Let's see. Supposed to be we have introduced introduction of synthetic parasitic gene and a double stranded DNA. हमने क्या इंट्रोड्यूस किया प्लांट के अंदर? ये है टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, डबल स्टैंडर्ड आरएनए. दिमाग में चलता क्या है? हम लोगों को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्लॉक करना है. तो व्हाट वी नीड? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्लॉक करना है तो हम लोग को और एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिकल. तो ऑप्शन में दिया होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए. हम लोग करके आ जाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. गलत हो जाएगा वो. आंसर करेक्ट क्या है? हम यार ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इट इज नॉट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने का क्या मतलब है भाई? चाहिए तो हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना? और ये है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट इन द ट्रांसजेनिक प्लांट? डबल स्टैंडर्ड डीएनए. किसका? सिंथेटिक पैरासाइटिक जीन. ये सिंथेटिक इसीलिए है क्योंकि हम लोग पीसीआर के थ्रू बनाते हैं. नाउ दिस इज एक्चुअली व्हाट? This is actually what? Not double stranded DNA. बन गया. Process to be followed. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पैरासाइटिक जीन. इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए टोबैको प्लांट. वेक्टर क्या यूज करेंगे? टीआई प्लस वेक्टर. ठीक है. ऑलरेडी मैंने बोला है क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक है तो हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे कि बोथ टेम्पलेट ये टेम्पलेट है एंड ये कोडिंग है. ये दोनों ही आरएनए बनाएगा. ये सिंथेटिक है इसलिए दोनों बनाएगा, लेकिन नेचुरल होता तो दोनों नहीं बनाते. हम लोग ऐसे डिजाइन किए हैं कि बोथ द स्ट्रैंड विल फॉरवर्ड द आरएनए. Now it is called as what? Na single stranded RNA. One is sense or mRNA. Second is antisense RNA. ये दोनों कंप्लीमेंट्री है कि नहीं? So as because they are complementary, so they will what na forward, not double stranded by means of RDRP, RNA dependent RNA polymerase. RNA dependent RNA polymerase that will convert the two single stranded RNA into what? Double stranded. RNA dependent RNA polymerase RDR बन गया.
अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हम लोग क्या यूज करेंगे ना, डाइसर। डाइसर इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लिएज। डाइसर क्या है, एक टाइप का न्यूक्लियस है। एंड ये न्यूक्लियस क्या करेगा ना, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देगा। फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना, siRNA, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। क्या है उसका नाम? So dicer will break down the double stranded RNA into siRNA. That is what na, short interference RNA, siRNA. तो शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए siRNA अभी डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड है। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस व्हाट ना, रिस्क, RISC, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इधर देखिएगा, आरडीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका फंक्शन क्या है? दैट विल कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डाइसर क्या है? इट इज ए न्यूक्लियस that will cleave double stranded RNA into siRNA. siRNA का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट इंटरफेरेंस RNA is called as siRNA. नाउ मैंने क्या लिखा? रिस्क RNA induced silencing complex. लिखिए फटाफट। तो RNA induced silencing complex होता क्या है? देखने में ऐसे है। तो आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। रिस्क इज एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, एंड उस कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम में क्या क्या प्रेजेंट है ना? पहले हो गया हेलिकेज, दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस, तीसरा है एंडोन्यूक्लियस, फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री सर्चिंग साइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्चिंग साइट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री साइट को ढूंढेगा। अब हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? रिस्क इंट्रोड्यूस किया है, दिया है ना यहाँ पे। तो होगा क्या, देखिए ये रिस्क आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। रिस्क इज बाइंडिंग विद द शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, एंड रिस्क में क्या क्या एंजाइम प्रेजेंट है? हेलिकेज, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड कॉम्प्लीमेंट्री सर्चिंग साइट। दिख रहा है आपको? नाउ दिस रिस्क अभी एक्टिवेट होगा। जैसे ही रिस्क एक्टिवेट होता है, रिस्क एक्टिवेट होने से क्या होगा? ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था अभी वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। Who will convert the double stranded siRNA into single stranded? हेलिकेज। पढ़े हो? हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है।
अनवाइंडिंग करता है. So because of that, now this unwinding of the DNA, sorry RNA is converted into what ना single stranded. अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड है, आप बोलेंगे ये सिंगल स्टैंडर्ड कौन सा है? Whether it is सेंस RNA or it is एंटीसेंस RNA. मैंने प्रीवियसली बोल दिया था. एक क्या है सेंस RNA, दूसरा एंटीसेंस RNA. यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड है, वन इज सेंस, अनदर इज एंटीसेंस. ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बचा हुआ ये एक्चुअली एंटीसेंस. सेंस लॉस हो गया, सेंस वाला डैमेज हो गया. ऑलरेडी सेंस तो फ्रैगमेंटेड हो चुका है, तो वो कोई हार्म नहीं करेगा. वो सेंस जो है लॉस हो गया. तो बचा कौन सा? अब इस एंटीसेंस के साथ हमने क्या बाइंड करके रखा है? रिस्क बाइंड है कि नहीं अभी? यहां तक हम लोगों का प्रोसेस चलता है इनसाइड द प्लांट, राइट? अब इस प्लांट को हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट. तो ट्रांसजेनिक प्लांट में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है स्टेप्स. अभी प्लांट रेडी है, प्लांट अभी बन गया रजिस्टर्ड. अब प्लांट रेडी है कि कोई अगर मुझे अटैक करता है तो मेरे पास भी डिफेंस है. ठीक है? अब यहां तक हो गया डिफेंस मैकेनिज्म. अब देखते हैं इस प्लांट को कोई इंसेक्ट अटैक किया, समझे? इस प्लांट को कोई इंसेक्ट अटैक किया, सपोज टू बी is it being attacked by a nematode. उस नेमाटोड का नाम मैंने क्या बताया था? मेलोडिका इनकॉग्निटा. तो ये नेमाटोड ने अटैक किया, तो नेमाटोड क्या इंट्रोड्यूस किया? पैरासिटिक जीन. अरे नेमाटोड को ग्रो करना है प्लांट के अंदर, तो नेमाटोड खुद अपना पैरासाइटिक प्रोटीन बनाएगा कि नहीं? नहीं तो ग्रो कैसे करेगा? तो पहले नेमाटोड अटैक करेगा तो पैरासाइटिक जीन रिलीज करेगा कि नहीं? ये तो नेचुरल है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि नहीं? अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नेचुरल पैरासाइटिक जीन है, प्लांट के अंदर ये क्या बनाएगा ना? सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए. By means of the process called as what? ट्रांसक्रिप्शन बनाएगा. एंड ये आरएनए जो ये सेंस है क्या एंटीसेंस है? सेंस है. एंड उसका एंटीसेंस देखो ऑलरेडी रेडी है. रेडी है. अगर ये प्लांट को अटैक करता है तो ये जो सेंस आरएनए है ना, यहां पे पहुंच गया. ये आके इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि ये तो एंटीसेंस है. एंड उसका होमोलॉजी सर्चिंग साइट के लिए कौन प्रेजेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री सर्चिंग साइट जो एंजाइम है वो अपना होमोलॉजी सर्च कर देगा कि ए के बदले टी, सी के बदले यू, है कि नहीं? तो ए के बदले यू, आई एम सॉरी, ए के बदले यू, ए के साथ टी तो बाइंड नहीं करेगा यहाँ पे, अभी तो थाइमिन नहीं होगा ना, ये तो आरएनए है. ए यू जी सी, ये जो होमोलॉजी है कहाँ पे है? तो ये कौन ढूंढेगा उसको? कॉम्प्लीमेंट्री सर्चिंग एक्टिविटी. बाइंड कर गया, बन गया फिर से डबल स्टैंडर्ड. समझ में आया? अब उसमें थर्ड देखिए, लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या है? एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस है ना, दिख रहा है कि नहीं? एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस बोथ आर न्यूक्लियस, मींस दे विल क्लीव द न्यूक्लिक एसिड. तुरंत ही आप क्या करेंगे? इसको कट कर देंगे. कट हो गया. नाउ इट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेड पैरासाइटिक आरएनए. डिग्रेड बन गया. अभी क्या प्रोटीन बनाएगा? खत्म.
आप लोग बैठे क्यों थे चुपचाप? बायोटेक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल चीज है, समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग ओपन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हम लोग को चाहिए था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन हम लोग इंट्रोड्यूस फर्स्ट क्या किया, डबल। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जाके वो किसे ब्लॉक कर दिया। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल, एंड व्हाट इज दैट, ना पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, राइट। Now we will come to the second example. हम लोग ट्रांसजेनिक टोमेटो देखेंगे, ट्रांसजेनिक टोमेटो। चलिए आगे, we are coming to the second example. A crop resistant to abiotic stress, crop resistant to abiotic stress, like transgenic tomato, flower saver. ट्रांसजेनिक टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो, and that is the tomato which resists towards abiotic stress. क्या abiotic stress है देखते हैं। एक्चुअली टोमेटो मतलब प्लांट है, टोमेटो का जो सेल वॉल है दैट इज प्लांट सेल वॉल कंटेन्स पेक्टिन। पढ़े हो आप? पेक्टिन इज द पार्ट ऑफ द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट, एंड उस पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है, डिग्रेडेड बाय पॉलीगैलेक्टोइरिनेज एंजाइम। Polygalacturonase enzyme. This is the enzyme which is responsible for the degradation of what? The pectin part of cell wall of plant. अब ये एंजाइम है, मतलब इसका एक, ये तो प्रोटीन है, मतलब इसका एक एमआरएनए होगा, है ना। हम लोग को इस एमआरएनए को ब्लॉक कर देना है। अगर इस एमआरएनए को ब्लॉक कर दिए तो क्या होगा, ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। अगर ये एंजाइम को हम लोग फॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिए बाय मींस ऑफ ब्लॉकिंग द एमआरएनए, then pectin will be not degraded so fast. अगर पेक्टिन को हम लोग डिग्रेड से प्रिवेंट कर देते हैं, then this tomato will not decompose early. है कि नहीं? नॉर्मली टोमेटो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ टोमेटो, एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ऑफ टोमेटो इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, ओवर राइपनिंग। एंड ओवर राइपनिंग का कारण कौन है ना, ये पॉलीगैलेक्टोइरिनेज एंजाइम जो कि डिग्रेड कर देता है प्लांट सेल को, सेल वॉल को, पेक्टिन पार्ट, इसीलिए ओवर राइपन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो एरोमा है वो लॉस हो जाता है। हम अगर इसको ब्लॉक कर दिए तो ये जो टोमेटो है लॉन्ग टाइम के लिए
डिग्रेड नहीं होगा, उसका जो एरोमा है, उसका जो टेस्ट है वो प्रिजर्व्ड रहेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली टोमेटो, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है खाली टोमेटो, इसीलिए मैंने टोमेटो का ही मेंशन किया, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। वी आर कमिंग टू, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी था हम लोग खत्म कर लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिएगा हेडिंग दिए थे हम लोग कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया जीएमओ, ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट, ग्रीन रेवोल्यूशन, देन योर गोल्डन राइस, ब्रासिका एनापस मतलब हिरुडिन, देन हो गया कौन सा ना बीटी, देन हो गया आपका योर व्हाट ना पेस्ट रेजिस्टेंट। क्लियर है? Now we will comes to the biotechnological application in the field of medicine. Application of the biotechnology in the field of medicine. तो पहली बात तो ये कि मेडिसिन में हम लोग बायोटेक का प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं। एंड बायोटेक में हम लोग बार बार बोले कि वी जस्ट कैन प्रोड्यूस ओनली प्रोटीन एंड दैट इज व्हाट द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सो एडवांटेज ऑफ recombinant proteins in medicine, number one, मास प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। नंबर टू, सेफ एंड मोर इफेक्टिव। क्वेश्चंस डायरेक्टली यहां से पूछता है। नंबर थ्री, दैट विल not induce unwanted immunological response। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन थ्रू द बायोटेक, बिफोर हम इंसुलिन के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा क्लियरली सब लिखा हुआ है, इसलिए इंसुलिन बेस्ड एग्जांपल ज्यादातर पूछता है। बायोटेक तरीके से इंसुलिन जो हम लोग बनाए हैं, जिसका नाम क्या था, हिम्यूलिन, याद है? मार्केट में बायोटेक इंसुलिन अवेलेबल होने से पहले जो इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल था, दैट इज एक्चुअली द इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द pancreas of the slaughtered cow and slaughtered pig. So we are getting the insulin for the treatment to the diabetes patient being extracted from the different other animals, and that will create some kind of allergic response and unnecessary immunological response in the patient's body, right? But here we are introducing the insulin hormone injection from the human protein. Matlab, this is actually the insulin which we are using nowadays. It is not from the different animals, although it is extracted or produced from the human gene से बनाया हुआ इंसुलिन है ये। तो क्या ये unnecessary immunological response को create करेगा? इसीलिए बायोटिक प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एक तो मास प्रोडक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, कौन सा, ब्रासिका वाला। सरसों का खेती किए और मास प्रोडक्शन ऑफ हिरुडिन हम लोग प्रोडक्शन किए। तो मास प्रोडक्शन है, सेफ एंड मोर इफेक्टिव है, प्लस अननेसेसरी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस भी यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एट प्रेजेंट, राइट दिस स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट
at present 30 recombinant therapeutics have been approved. Recombinant therapeutics have been approved globally. And 12 of these are presently being marketed in India. Twelve of these are marketed in the India, लेकिन globally कितना approved हुआ है? लेकिन इंडिया में कितना है? ठीक है? सेंटेंस लिख लिए? नंबर 1, ये 12 का लिस्ट थोड़ा सा मैं कल आइडिया दे देता हूँ. ह्यूमन इंसुलिन. ह्यूमन इंसुलिन का ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज टाइप 1. नंबर 2, स्ट्रेप्टोकाइनेस. हम लोग पढ़े थे सर्कुलेशन चैप्टर में, अगर क्लट फॉर्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, उसको क्लीन करना जरूरी है. एंड दैट इज क्लीन बाय द क्लट बस्टर and called as streptokinase, otherwise called as TPA, tissue plasminogen activator. So it is act as a clot buster for heart attack. Number 3, erythropoietin. Erythropoietin is a hormone which will stimulate the erythropoiesis. मतलब ये एनीमिया का ट्रीटमेंट होगा. नेक्स्ट नंबर 4, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. हम लोग पढ़े थे सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दोनों ही आता है हेपेटाइटिस में. नेक्स्ट HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, है कि नहीं? एंड दैट इज फॉर द ग्रोथ डिसऑर्डर. ये सारे के सारे प्रोटीन है. नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. That is GCSF, granulocyte colony stimulating factor, and this is for the cancer treatment. Human interleukin. Human interleukin, that is IL. It is for the cancer treatment and autoimmunity treatment or immunological disorder. Number 8, granulocyte macrophage. Granulocyte macrophage, CSF, cerebrospinal fluid, right? It is also for the your what ना कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. अल्फा इंटरफेरॉन. अल्फा इंटरफेरॉन, इट इज फॉर द ल्यूकेमिया, मतलब ब्लड कैंसर एंड अदर कैंसर. Point number 10,
gamma interferon. Gamma interferon for the cancer and for the rheumatoid arthritis. Number 11, that is blood clotting factor. Number 8, याद है ना? हेमोफिलिया ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. And the number 12, that is FSH, follicular stimulating hormone. ये infertility treatment होगा. Means these are the 12 which is being marketed and approved in India for the treatment purpose among from the 30 recombinant therapeutics being globally approved. Next class में हम लोग इंसुलिन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, जो बार बार हम लोग एक्चुअली उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.